Indian writer Geetanjali Shree has been nominated for the Booker. Her work, Samadhi, becomes the first novel in Hindi to get such a nomination. Of course, it's been translated into English by her well known in American based writer and author Daisy Rockwell. We'll be talking to both the extraordinary women in moments from now. Red Samadhi tells the fascinating story of an 80-year-old woman as its key protagonist who slips into depression after the death of her husband, but then the remaining years of her life become a process of rediscovery. This Booker nomination comes, of course, against the backdrop of a larger conversation about the place of Hindi, not just in literature, but also in the identity of India as a nation. Let me introduce both of our guests on the program today. As I said, author Geetanjali Shree is with us, and the translator of this extraordinary work, Daisy Rockwell, is with us as well. Thank you and welcome and congratulations to both of you. I think, as is fitting, I will keep this conversation partly in Hindi and partly in English. तो गीतांजलि धन्यवाद आपसे शुरू करती हूँ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ इस नॉमिनेशन के लिए जो पहली बार जो एक हिंदी का वर्क ऑफ फिक्शन है उसको बुकर नॉमिनेशन मिल रहा है आपसे सबसे पहले पूछूंगी कि ये जो एक तरह से ट्रांसेंडेंस है does it prove that language and literature have a way of understanding each other? It doesn't really matter what the language is, it's the power of the story that matters. Geetanjali ji. Thank you, Barkha ji. It's lovely to be here. And like I said, I'm a great admirer of all the work that you do, the brave work that you do. So it's really wonderful to be in conversation with you. देखिए बिल्कुल सही बात है और सहज बात है कि अगर कहानी अच्छी है तो वो दुनिया के किसी भी छोर की हो और किसी भी भाषा में हो उसमें सार्वभौमिक तत्व होंगे उसमें मानवीय जो बातें होंगी वो सबके लिए मायने रखेंगी so it's I think the cultural milieu gives it its very specific colors and flavors and fragrances which make it absolutely wonderful in different ways from different places but the basic story and the inner story is about humans and it can touch anybody transcending all boundaries. या और आपने जैसे कहा कि एक यूनिवर्सल पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती हैं एंड देयरफॉर देयर इज अ वे दैट लिटरेचर हैज द रिटन वर्ड हैज ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर्स एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज सो पोलराइज्ड डेज़ी लेट मी आस्क यू हाउ डिड यू end up becoming a collaborator on this. मैंने कहीं पढ़ा that both of you actually never met face to face. This was sort of done virtually. So talk a little bit, Daisy, about how you sort of became the English voice to Geetanjali's original work, which was, of course, in Hindi. My cat just joined the conversation. What is your cat? What is your cat's name? What is your cat's name? This is Princess Leia. My daughter named her. hello, Leia. Go ahead. Yes, let's see. We were talking about literature. So Arunava Singha, the amazing Bangla translator, basically set us up. He was approached by Deborah Smith, who is the editor of and the publisher in the UK of Tilted Access Press. And he was approached by her because she had heard that this book was something really special, and she wanted to find the right translator. So Arunava very kindly recommended me, and then he introduced us over email. And this is, in fact, our first live video conversation. We've never communicated via Zoom or when we spoke for the first time on the phone on the day we were shortlisted. That is amazing. You mean you've never actually got onto a video call and seen each other like No. in a tactile way?
throughout the pandemic, when everyone else was zooming, we were typing. Okay, that's quite something. I'm glad to be the enabler of that Yeah. face-to-face meeting, not just for you, but also for Princess Leah, your cat. Yeah. Uh, Gitanjali, I want to ask you about the protagonist. I'm fascinated by the fact that an 80-year-old is the protagonist of your book. और मैं मुझे इसलिए ये बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ लगती है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर अगर हम अपनी पिक्चरें देखें, अपनी मूवीज देखें, तो देयर इज नो रोल फॉर वुमेन और वेरी फ्यू रोल्स फॉर वुमेन इवन अबव 50. आपने एक पूरी कहानी लिखी, एक पूरी किताब लिखी अबाउट अबाउट अ वुमन हु इज 80, जिसके बारे में अज्यूम किया जाएगा कि इनकी जिंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं. एंड and then she begins this process of discovering herself again, revisiting the trauma of partition, rediscovering herself as a woman. तो इसमें ये एक आइडिया था, ये आपको कहाँ से आया? और मैंने ये भी पढ़ा कि आपकी अपनी जो माँ है वो आपकी लाइफ में बहुत एक बड़ी फोर्स रही हैं, आपका जो नाम है वो भी माँ का नाम है, तो थोड़ा इसके बारे में खुल के बताएं. देखिए बरखा जी, ये तो आपको शायद पता होगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से मालूम हो कि आपकी कथा कहाँ शुरू होने वाली है और कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ ख़त्म होगी. मगर ये बात शायद हम सबको परेशान हमेशा ही करती रही है कि औरतों की क्या ज़िंदगी होती है, या कितनी छोटी होती है, या कितना बड़ा अंश उनकी ज़िंदगी का दूसरों की खिदमत में चला जाता है, और कब जाके उनको कोई ऐसा पल मिलता है जब वो अपनी तरफ मुखातिब होती हैं और अपने मन का करती हैं. तो ये सब चीज़ें, तो इस तरह का उद्वेलन हमेशा रहा मेरे शायद ज़ेहन में. और तो ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ हुई और मैंने अचानक शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं है. बट इट वाज़ देयर, already there in my inner world, and these were things that I used to feel and think. And the trigger came, Daisy would know that very well, but the trigger came from the image of the back of an old woman in a joint family, and she's bedridden and she's got her back to everybody. And the family keeps trying to get her up, they feel very bad. She looks like she's got no interest left in life and she just wants to die. I think that's a very common image in our families. We all know that they feel useless and they feel there's nothing left to do, so they're just lying there and looking bored. And so this back started interesting me. This image kind of stayed with me, and it started sort of stirring up in me a curiosity about what is it doing. Is it because she's turned her back on life and the world, or is it because she's tired of the immediate life behind her, and she actually wants to break out into something else? And from there, the that was a seed of the novel, if you will, or the trigger, I would say. And from there it grew, and once she decided to get up and do things, and especially once she decided to the dynamic of her character just took over, and she decided to go hop skip across borders, then there was no stopping her. You grew up, as you said, in Uttar Pradesh, where you said that there was a lot of access at that time to writings in Hindi, writings in Urdu. But you also grew up as a daughter of a bureaucrat who probably wanted you to become an IAS officer, marry at a certain age, and so on. How many shades of your own mother, albeit in a fictionalized way, Gitanjali, find its way into this work? Well, I couldn't possibly, give you an exact answer to that, but certainly, there would be shades of many such mothers. I would say my mother is, one amongst many, many such mothers, and perhaps Daisy will second me on this, that it's not only an Indian mother. Possibly mothers across the globe will surprise us with their, well, with the various similar shades and sudden sort of desire to live again. Yeah. Daisy, if you'd like to come in there, there's an assumption in all of our societies. The identity of a woman is so linked even now to being
a wife and a mother, that there is an assumption that if those identity points are taken away, and of course there's great grief and there's great loss and there's great sorrow, as there is with anyone who loses a way of life or someone they love, but that women in particular will lose the desire to love. And that's why I find the premise of this book so very compelling. Daisy, what about it leapt out at you? Was there something universal about the idea of this woman whom everybody assumed had diminished, and then she suddenly finds this energy in herself, a curiosity, unfinished business, revisiting unaddressed traumas of her past life and so on? Yes, it's it's obviously a very Indian story in the sense that while she's lying there, she's surrounded by people, by the joint family, and people just constantly talking and trying to access her and going about their own lives. So that's obviously very Indian, but on the other hand, I think it's also a story that anybody could really relate to. Like my mother had gone through a long terminal illness about 2 years before I started translating the book, and there's the middle section is kind of all about the mother-daughter relationship when the mother moves in with her daughter, which is very non-traditional in the Indian context. And the daughter becomes the mother in the sense that she has to care for her mother, and the mother becomes the daughter. And I think that's extremely kind of universal story that so many people can relate to, that time when the roles start to reverse, and it's shocking and touching, and I felt very touched by it myself. Yeah, and I think in these 2 years of the pandemic, so many of us have watched ourselves either become just like the parents we never thought we would become, or become caregivers to them. So there's a kind of universalism, and especially at this time. और गीतांजलि मैं ये समय के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहती हूँ. मैं भाषा पे उसके बाद आऊंगी, लेकिन ये जो समय है, ये कॉन्टेक्स्ट है. ये किताब एक्चुअली आपने कुछ साल पहले लिखी, ट्रांसलेट अभी हुई है, लेकिन इसकी जो एक रेजोनेंस है एट अ टाइम ऑफ सफरिंग एंड सॉरो, जो दुनिया एक तरह से एक इमोशनल रप्चर पूरी ही दुनिया ने एक्सपीरियंस किया है, घरों में एक्सपीरियंस किया है. माँ बेटी का जो रिश्ता है, मैंने एक छोटा सा एक सब पढ़ा, उसमें एक खिड़की है जिसमें से इट्स ऑलमोस्ट लाइक द विंडो टू फ्रीडम, एंड इट्स अ विंडो टू फ्रीडम नॉट जस्ट फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द डॉटर और फॉर वुमेन एवरीवेयर. देखिए, मेरे लिए ये किताब एक बहुत बड़े परिवेश से जुड़ती है, गैर इरादे. मैंने ऐसा सोच के नहीं लिखा था, लेकिन इस किताब को लिखने में मुझे बहुत वक्त लगा. 6-7 साल ज़रूर लगे हैं. मैं इसके संग रही हूँ. तो ये सिर्फ आज और कल की बात तो नहीं, लेकिन दुनिया में जिस तरह से लोगों के बीच बंटवारे हो रहे हैं, जिस तरह की दरार पड़ रही है, जिस तरह से हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसी डायडैक्टिक तरह से मेरे लेखन में नहीं आती हैं, लेकिन मेरे ज़ेहन में ये चीज़ें थीं, ये परेशानियाँ थीं, और मैं खुद हैरान होती हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें अपने-अपने रास्ते ढूँढते हुए मेरी इस कृति में आती चली गईं. तो एक तरह से ये आप जो कह रही हैं, पिछले इन वर्षों में और आज भी कुछ जो इतना गड़बड़ हो रहा है दुनिया में और इतना गड़बड़ हुआ है, उसके खिलाफ या उसके प्रति एक चेतावनी सी मेरे लिए, मैं जब इसको अब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें देखिए ये पूरी कायनात को जोड़ती है, कहती है कि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं. ये इसमें जो हर जिंदा चीज़ जुड़ी हुई है, जो जड़ है वो भी चेतन है. तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं. एक किस्म कुछ होता है तो उसका असर बहुत सी और चीज़ों पे भी पड़ता है. फिर बॉर्डर्स को लेकर जिस तरह के गड़बड़ हो रही है, ये बॉर्डर्स कितने ज़्यादा नफ़रत की वजह से हैं, उसके खिलाफ इसमें जो किरदार हैं उनकी आवाज़ उठती है. मेरे ख़्याल में प्यार और दोस्ती का जज़्बा इसमें कहीं ज़्यादा उभरता है.
तो ये सब चीज़ें मैंने उस तरह से सोची नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये जो विस्तृत दुनिया है और हम सब की जो ये बड़ी दुनिया है, वो हमको परेशान कर रही थी, हम सबको परेशान करती है। और वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इसमें जुड़ती चली गई, आती चली गई। Bilkul. And we are, as you pointed out, all interconnected in ways that perhaps we discovered in the last 2 years of this pandemic. It wasn't equal for everybody, but No. it certainly spared no one. Let me ask you, finally, I want to talk a little bit about language. This is the first Hindi novel to be nominated. Daisy, first to you. How did you get interested in Hindi as a language? It's kind of a random thing that happened in my life. I was always a student of languages from a pretty young age, and in American colleges you're encouraged, it's very different system, so you're encouraged to explore your interests, like sort of like a buffet. And so I had studied a bunch of European languages, and I was studying Latin and Greek at the time, and I suddenly decided I wanted something very unfamiliar that would really challenge me, and I ended up in a Hindi class. So there's no clear logical reason why I did that, but once I went into that Hindi class, I kind of never came out again, and so here I am Lovely. today. And I think this kind of makes me, when we talk about language with this book, I wanted to connect back to what you keep bringing up, the universalness of the story, and that's very true. But on the other hand, as I say in my translator's note, this book is also kind of a love letter to Hindi. The language is very important. It's critical to how the story is told, and so that made it very challenging to translate, because taking it out of Hindi is removing an enormous aspect of the book, and a very important aspect of the book. And so what I tried to do was make it, Geetanjali speaks a lot about dhwani, the word dhwani, like echoes and reverberations. I kind of tried to make the English language, a dhwani of the Hindi, and so that it's not in Hindi anymore in the translation, but you can kind of feel it. You can feel the Hindi through the English, and I also had to kind of replicate wordplay, but make it English wordplay. So, it's a very complex process to get it into English. Of course, I mean, translation is an art, fine art by itself, and as you said, it's not literalizing, but actually being an echo or a vibration of the same. Though the idiom changes, the syntax changes, everything changes, the way of thinking changes. And so, finally, Geetanjali, आपसे पूछना चाहूंगी हिंदी के बारे में. आपकी नॉमिनेशन ऐसे वक्त पर आई है जब देश में चर्चा चल रही है हिंदी को लेके. हमारे जो साउथ की स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ये भाषा इम्पोज नहीं होनी चाहिए. हमारे गृह मंत्री का एक बयान आया कि हिंदी एक लिंक लैंग्वेज बन सकती है. तमिलनाडु से और जो हमारे प्रदेश हैं साउथ में एकदम एक तरह से एक बैकलैश हुआ. दूसरी तरफ ये भी है कि एक कलोनियल हैंगओवर है हमारी एजुकेशन में. हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो डीरेसिनेटेड एलीट है जिनको अंग्रेजी तो ठीक ठाक सिखाई गई, लेकिन चाहे वो हिंदी हो चाहे अपनी मातृभाषा हो, जैसे मेरी पंजाबी है, नहीं सिखाई गई क्योंकि उस समय हमारे माँ बाप को लगता था कि अंग्रेजी सिखाए सबको, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ नॉट जस्ट प्रोग्रेस बट ऑल्सो बीइंग प्रोग्रेसिव. सो हाउ डू यू एक्चुअली as a writer in Hindi look at this raging debate around Hindi in our country today? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हिंदी जहाँ तक कला जगत की भाषा है उसको इस राजनीति से जोड़ दिया जाता है. मुझे नहीं लगता कि जो साहित्य जगत में हो रहा है वो वही है जो हमारी सरकार, अफसोस है, कर रही है. ज़बरदस्ती चाहती है कि हिंदी जो है सब पर थोपी जाए. वो तरीका ही गलत है. आप जहाँ इतनी भाषाएं हैं और हर मातृभाषा की इज्जत है, उसकी जगह है, वहाँ पर क्या परेशानी है अगर
इस देश में सब लोगों को ये शिक्षा का, हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह की बने कि हमको अंग्रेजी के अलावा हिंदुस्तान की मान लीजिए 2 भाषाएं सीखनी ज़रूरी हैं, कि आप अपनी मातृभाषा भी सीखिए और एक और भाषा भी सीखिए। कम से कम इतना, इसमें क्या परेशानी है? इसमें हम लोग सब ज़्यादा समृद्ध ही होंगे। ऐसी कोई चीज़ उधर से नहीं आ रही है, और उसमें अ, हिंदी की बदनामी भी हो रही है और हिंदी को लेकर चिढ़ भी बढ़ रही है, खासकर दक्षिण के जो सारे प्रदेश हैं उनमें। अफ़सोस कि हम जैसे लोग और हमारा जो साहित्य जगत है वो भी उसमें फँस जाता है। हालाँकि हम शायद उस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। ना बिल्कुल हम तो अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं। हमारे पास, और इसमें भी कोई जिंगोइज़्म और शोविनिज़्म मुझे नहीं लगता कि हम अभी साहित्य जगत में है। मैं अपनी मातृभाषा में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये भाषा मुझे सहज लग रही है, मेरे एक्सप्रेशन के लिए मुझे सटीक लग रही है। इसलिए नहीं कि ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और हिंदी तो मातृभाषा है वगैरह। मुझे अंग्रेज़ी से कोई परेशानी नहीं है, और मुझे इससे भी परेशानी नहीं है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका एक्सप्रेशन अंग्रेज़ी में ही सबसे प्रभावशाली बनता है, वो उसमें लिखना चाहते हैं। तो ये बातें तो एक तरह से आपके इंट्यूशन की हैं, आपके भीतर, आपके एक्सप्रेशन की हैं, आप किसमें पाते हैं कि आप सबसे बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसलिए अपनी भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो जो सरकार जिस तरह से कह रही है कि इसमें होना चाहिए और सबको ये आना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है भाषा को फैलाने का, भाषा को किसी भी तरह से लोकप्रिय बनाने का, बल्कि आप इस उल्टा ही कर रहे हैं। आप हिंदी के साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसे ही मुहिम चलाकर। जी, लेकिन मैं फिर एक एक और मेरा सवाल ये है कि लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ बीन क्वाइट पॉलिटिकल। आपने कहा कि भाषा को राजनीति से ना जोड़ना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज इज़ पॉलिटिकल। हमारे देश में प्रदेश फॉर्म हुए हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देयर हैव बीन लैंग्वेज मूवमेंट्स, एज़ वी सी इन तमिलनाडु, गीतांजलि। और अभी शायद आपने देखा होगा कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो जिसमें एक लड़की जो अपने आप को पत्रकार कहती है, वो एक दुकान में जाकर ऑब्जेक्ट करती है कि किसी हल्दीराम की नमकीन के पैकेट पे उर्दू लिखा है, और वो उर्दू को एक बाहर वाली फॉरेन लैंग्वेज की तरह रेफरेंस करती है, ऑल्दो उर्दू इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्रिंटेड ऑन द इंडियन करेंसी। तो as and of course she says Urdu, but the actual language on the packet is Arabic. That's the irony. But she's objecting to Urdu because she's conflicting Urdu with Muslims, of course. Uh, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा. I know you grew up reading not just in Hindi but also in Urdu. अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे ताली? देखिए, ये तो है ही कि इसको भाषा भाषा पे अभी ही नहीं, बहुत मतलब अब तो मेरे ख्याल में स्वतंत्रता का की जब मुहिम चल रही थी तब से तो ये शुरू हो ही गया था कि इसको पॉलिटिसाइज तरह-तरह से किया जा रहा था। इसके पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, कैपिटल वाज़ बीइंग derived from it. So definitely, I mean, this is going on, and it is, to that extent, you are absolutely right that it is a political question. But I think that is what people like us have to be alert to, and people like us have to say. I mean, our objection is to the hierarchies being created between languages. Our objection is to the darar being created between languages, and languages being treated like representative of the other who is to be shunned, etc., etc. So of course we whether we like it or not, we fall into that debate. But I think that's where we have to um, well express ourselves and promote our point of view as much as we can, as best as we can. And I think that is what the challenge is, Yeah. to put it in perspective, to bring it to bring the what we consider the right way in this politics.
Well, I think as Daisy's arbitrary discovery of Hindi and then love for it proves, and as is proven by the fact that both of you were able to collaborate without even coming face to face, there is magic in words, there is magic in storytelling. And those are the connections that we should emphasize, and I think that is what we need to celebrate about this moment for both of you. So congratulations and thank you so much, Daisy and Geetanjali, and may you bring home the Booker. So thank you so much and take care. Thank you. Thank you. Bye-bye. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.